विधिवत शुरुआत के साथ ये कामना की गई कि इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जिस दिशा में आगे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले वक्त में नए कार्यक्रमों के माध्यम से नई जानकारियां नई दिशाओं की तरफ बढ़ने के लिए साझा की जाएंगी। आपस में विचार विमर्श करके तय किया जाएगा कि किस तरह से ये सोसाइटी आने वाले वक्त में समाज को नया और बेहतर कुछ दे सकती है। इस दिशा में एक कोशिश की वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग न्यू दिल्ली Ranchi Chapter to please come forward and welcome the dignitaries as well as the other students. May I request Dr.RS sir to please come forward for his speech. With the permission of the Chief Guest and Honourable Vice Chancellor, I would like to emphasize some of the very important and notable contribution what Indian Society of Genetics and Plant Breeding has contributed in terms of increasing production and productivity not only of this country but at global level. If you recall the back history of Indian agriculture, I think these very societies are established before independence, 1941. If you recall back, the very important society of this very country, that Indian Society of Genetics and Plant Breeding was established in 1941 before independence, and the very first president of this national society is nobody else than Dr. B.P. Pal, who is the first president of this Indian Society of Genetics and Plant Breeding, and he happens to be the first Director General of Imperial Council of Agriculture Research, which was later changed as the Indian Council of Agriculture Research, and Dr. B.P. Pal continued and served longest period of Director General and Secretary there of Indian Council of Agriculture Research. So this is the legacy of this important society. Other departmental society like Indian Society of Agronomy, Soil Science, Plant Pathology, they are also existing, even forestry and veterinary. But this society has contributed immensely for the benefit of human mankind. If you recall the 20th century, because this is 21st century, 2019, and if you recall back the 20th century, I think two landmark contribution in the field of science which has been taken place. First is Green Revolution in 60s and 70s, and another is a IT, Information Technology Revolution. And this is the information technology revolution that we are well connected with each other, and any happening which are happening throughout the global level, I think we are well versed with the kind of information which is available through internet or any kind of media, electronic media which is available. So I think our wheat production was hardly 9 billion tons. But last year we have crossed, it means 2018 and 19, we have crossed the billion mark, and we could produce 101 million tons of wheat. I think this is the record production which could witness, and this has become only possible because of the kind of integration through Norintane which was introduced in the cultivated variety of that very time. Similar contribution was made in rice, I think first two variety IR8 and Jaya, which came in the existence after the integration of DG gene. And at that time total rice, I am talking about milled rice, not the paddy, total production was only 20 million tons. But I think last year in 2018-19 we could harvest more than 116 million tons, and total food production was 291 million tons, and this country which was food deficit that has become food surplus because of the kind of contribution made by scientists related to crop improvement, genetics and plant breeding, and through integration of the society. The programs which were organized in different schools and colleges, you all know that it took a lot of effort, and everything meant only for the development and the information they wanted to share with you. So now may I request him to please come forward and share the report with you. Secretary's report for that. Secretary's report about the chapter established in 2012, and it comes under the mid-eastern zone, which includes Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh and Uttarakhand. So we are the only chapter for this mid-eastern zone. After the establishment, we had made our bylaws, which comprises for the development of the society.
decided to hold some activities regularly. It is number one, essay competition. Number two, inviting students from different schools and colleges to our department and to sensitize them with the subject of genetics and plant breeding. Why? It is very interesting. All are human beings. You forget everything, but remember one thing. When there is some new baby come in a family, old people, नानी दादी यूजुअली से इस बच्चे का मुंह फादर से मिलता है, होंठ ग्रैंडफादर से मिलता है, आँख मदर से मिलती है. सुना है कभी? डेफिनेटली सुना होगा. It is nothing. It is genetics. You see how fascinating it is. They understood it. What is it? But they never knew the science of genetics. It is very fascinating. That's why I used to call the students from schools also to tell them how it works. It is genetics. Okay? Congratulations, Manu. And she has come with grandpa and mama. Friends, you are also invited to come over here. To have interaction with their students and other students and other society. For example, this is genetics and plant breeding subject, and it has society at different levels. One is at this college level. Every college might have chapter society that will be member of the central society. What is that society? Society is not meant for money collection or something like that. This is a collection, and this is a center where the subject teachers, subject students can interact for their subject's benefit. So, Soil Science Society, Chapter Ranchi, Agronomy Society, Chapter Ranchi, and there are plant pathology, entomology, all subjects. जितने भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उनके सबके सोसाइटी होंगे, और जो कॉलेज लेवल पर होगा उसको चैप्टर सोसाइटी बोलते हैं, और फिर ये सेंट्रल सोसाइटी होती है जो कि इंडिया लेवल पर होती है. और मोस्टली सौभाग्य ये है IRI का, जिसका नाम आपको बताया जाएगा किसी क्लास में, कि वहाँ पर सबका सेंटर है. वो लोग क्या करते हैं कि अपने सब्जेक्ट का जर्नल छापते हैं, पेपर छापते हैं, रिसर्च जो होता है उसको छापते हैं. Chancellor of the University, Dr.RS Kureel. Now may I request him to please come forward for this speech. मटर में उन्होंने देखा कि अलग अलग कलर के फ्लावर को आपस में जोड़ना शुरू किया, जिसको इन सब लोगों ने इमस्कुलेशन का नाम देते हैं. हम लोग जेनेटिक्स में इमस्कुलेशन कराते हैं, तो उससे कुछ और नया कलर निकल पड़ा. ये बात मेरे ख्याल से 1765-70 की होगी है, 1860. हाँ. और उन्होंने एक पेपर भी प्रेजेंट किया था, वो दैट वाज आल्सो रिजेक्टेड. फाइनली वो डंप हो गया उनका किया हुआ जितना भी काम था. लेकिन फॉर्चुनेटली कुछ 3 वैज्ञानिकों ने उनके बाद में उस पर काम किया, और उन तीनों लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया कि नहीं, जो ग्रेगर जॉन मंडल ने पेपर प्रेजेंट किया था दैट वाज करेक्ट एंड दैट वाज राइट. फिर उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स का वो दिया गया. तो देखिए, एक मैथमेटिक्स पढ़ने वाला बच्चा एक दुनिया का जेनेटिक्स का फादर बन गया. कुरियन साहब को आपने सुना होगा, बर्गिज कुरियन. वो जूनियर इंजीनियर थे. उन्होंने मिल्क के लिए इतना बड़ा ब्रेक थ्रू ला दिया जिसको हम लोग यहाँ पर व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं. और ऐसे ही वो
नॉर्मल ई बोरलॉग पैथोलॉजी करके होकर के भी इतना बड़ा उन्होंने इतना बढ़िया रिमार्केबल जीन बनाया जिसमें दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। तो कोई बड़ा काम करने के लिए मुझे लगता है कि इंडिया में दो ही बड़े रेवोल्यूशन हमें नजर आते हैं। एक तो ये आईटी सेक्टर है जिसमें सभी बच्चे चपरासी चौकीदार से लेकर के काम करने वाले फार्मर से लेकर के प्राइम मिनिस्टर तक लिए घूमते हैं मोबाइल। ये एक बड़ा रेवोल्यूशन हुआ कंट्री का, और इस रेवोल्यूशन ने आईटी सेक्टर ने बहुत सारे सेक्टर्स में सभी सेक्टर्स में ऑलमोस्ट इंटरफेयर करके उनको और एक्सेलरेट कर दिया। और दूसरा ही हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से इंडिया को बड़ा फायदा हुआ। ये मुझे लगता है इस सेंचुरी के सबसे बड़े कामों में से गिने जाएंगे। ये मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, तो इस पर भी बहुत बड़ा स्कोप है काम करने का। और खासकर झारखंड में यहाँ पे 65 लाख टन का फूड रिक्वायरमेंट है और हम लोग पैदा करते हैं 55 लाख टन। यानी अभी भी ये झारखंड स्टेट जो है फूड डेफिसिट स्टेट है, 10 लाख टन का शॉर्टेज है। ये एग्रीकल्चर के यंग ग्रेजुएट्स के लिए एक चैलेंज है। ये गैप कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा कम फुलफिल हो, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। तो सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है ऐसा भी नहीं है, हमेशा स्कोप रहता है काम करने का। तो जो यंग साइंटिस्ट होने वाले हैं हमारे एग्रीकल्चर के ग्रेजुएट जो बच्चे दिख रहे हैं, उनके मन में ये बात हमेशा सोचते रहना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या करें कि ये जो 10 लाख टन का कम प्रोडक्शन हो रहा है जिसको हमें झारखंड स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ता है, दूसरे स्टेट से परचेज करना पड़ता है, तो ये झारखंड स्टेट डेफिसिट स्टेट से सरप्लस स्टेट में कैसे कन्वर्ट हो और कब कन्वर्ट हो, कितनी जल्दी हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। अब इसको पूरा करने के दो रास्ते होते हैं। एक तो जो हमारे पास 28 लाख हेक्टेयर है और हो सकता है 38 लाख हेक्टेयर, यानी 10 लाख हेक्टेयर एरिया और बढ़ाया जा सकता है। उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पे दिमाग लगाना है। सारे बच्चे विलेज के हैं, अपने अपने गांव के हैं, क्षेत्र के हैं, वो सोच सकते हैं, देख सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारे फैकल्टी प्रोफेसर्स के बस की बात नहीं। एक हमें 10 लाख हेक्टेयर एरिया बढ़ाना है और 10 लाख टन प्रोडक्शन बढ़ाना है, जिससे हम एक कम से कम सेल्फ सफिशिएंट या सरप्लस स्टेट फूड प्रोडक्शन में बन सके। दूसरा एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, पर यूनिट यील्ड कैसे बढ़े, ये भी एक बड़ा चैलेंज है साइंटिस्टों का। इसी पे ज़्यादा रोल होता है पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ाने पे। तो उसके लिए जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग एक बड़ा रोल प्ले करता है। मेजर ब्रेक थ्रू इसी से आता है, बाकी एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट से भी आता है, बेटर मैनेजमेंट से भी आता है। दोनों एस्पेक्ट्स हैं, तो इन दोनों एस्पेक्ट पे बच्चे सारे सोचें। ये दो टारगेट्स हैं हमारी तरफ से, और जिन बच्चों को आज अवार्ड मिला उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत अच्छे से वो आगे फ्यूचर उनका ब्राइट है, आगे से काम करें, बहुत अच्छा ये बिगनिंग है। और जो लोग पार्टिसिपेट, Chairman GPB and Secretary of this society and all invited guests, students and ladies and gentlemen, it is my privilege on behalf of the chapter, Ranchi chapter of Indian Society of Genetics and Plant Breeding, the entire team here together, and on my own behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our Honourable Vice Chancellor Dr. Kureel, who expressed always his keen interest towards our society's activities, even including particularly that national seminar in Ranchi Agricultural College, to be present and grace the occasion, because the society is grateful to him for providing all the facilities of